Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. From the platform of English Buffet.5, I am going to impart you something of much value. Yes, that is from grammar. So let's talk about another dimension from the topic of verb. Verb की basics मैंने already आपको बताई हैं. Recently we have done model verbs, but today I'll be telling you कि एक्शन वर्ब्स को बेसिकली हम किन दो डायमेंशंस में, टाइप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? यू नो व्हाट आर द एक्शन वर्ब्स, वो वर्ब्स जो कि हमें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एक्शंस बताते हैं. उनको हम दो कैटेगरीज में लेके जा सकते हैं, एक ट्रांजिटिव है और एक इंट्रांजिटिव. So, hope you are ready for receiving the lesson. Especially, it is very helpful for those who are currently studying at any level. Okay, especially from SSC 1 and 2 and upwards. So, those have to pay really very, you can say, attention. They have to be very attentive now. So let's get started. I am directly starting it from taking an example, क्योंकि direct example से start करें तो समझ बहुत सारे students को जल्दी आ जाती है. So let's get started. See, I bake some cookies. I ride the bicycle. I move the chair. This is transitive verb. Whereas see the sentences on this side. I laugh. I cry. The book falls. These are intransitive verbs. Hope you got कि actually verbs हैं कहाँ पे. Okay. बेक, राइट, मूव, यहाँ पे लॉफ, क्राई एंड फॉल्स, ये हमारे वर्ब्स हैं. व्यूअर्स, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन दीज sentences? You can say like I bake some cookies and I laugh. Definitely it is the difference of the structure. I subject, bake is verb and some cookies is object. So transitive verb is having a sentence which is holding three items: subject, verb and object. And what is lacking here? I laugh. It is subject and verb, but there is no object. So that is the difference of transitive and intransitive verb. Okay? Transitive verbs को अपना meaning properly convey करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. लाइक आई बेक, अगर सेंटेंस यहाँ पे फिनिश होता है तो वी डोंट नो व्हाट आई बेक्ड. ओके, सो इन ऑर्डर टू टेल कम्प्लीटली कि बेक हुआ क्या, आई हैव टू ऐड हेयर एनी ऑब्जेक्ट, सम कुकीज़ और वट एवर इट इज़, राइट. जब हम ये ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो ये कम्प्लीटली थॉरोली अपना मीनिंग कन्वे करेगा. इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रखता है. जबकि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कह लें कि दे आर सेल्फ सफिशेंट, दे होल्ड द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन देमसेल्व्स, सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, राइट. इसी तरह से ये लाफ, क्राई एंड फॉल, इसी तरह से और भी बहुत से वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स, जो कि अपने अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रखते हैं और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए. सो व्यूअर्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. What's the difference of transitive and intransitive verb? Transitives need object at the end to clear their meaning. Okay? Whereas intransitives don't. So इस चीज़ को आपने याद रखना है. Most verbs express action. Often that action is directed towards another word in the predicate, that is the object. Okay? A verb that directs action towards something or someone named in the predicate is called a transitive verb. This is what I have explained in the previous slide. Right? Let's take some more examples ताकि आपको मज़ीद इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों आपके सामने हैं. देखें, हम नंबर 2 लेते हैं. लेट्स टेक रीड. Read can be used as transitive and intransitive verb, but how? We are reading your new book and we are reading. यहाँ पे action complete है. We are reading, it means we are reading. That's it. So there is no object at the end. It is intransitively used, okay? It is intransitive verb, you can say. Whereas we are reading your new book. If some you can say more explanation is needed, you can add any object after this verb. याद रखें कि हर verb transitive
ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ट्रांजिटिव की कैटेगरी में ही आएगा, या सिर्फ कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंट्रांजिटिव में आएंगे, कुछ मिक्सचर हैं दोनों का, राइट। अभी अपकमिंग स्लाइड में मैं इनका डिफरेंस भी आपको बताऊंगी। इसी तरह से देखें, कैंसिल, एड कैंसल द रिजर्वेशन, कैंसल्ड व्हाट, द रिजर्वेशन, दिस इज ऑब्जेक्ट। जिस तरह योर न्यू बुक क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसी तरह से इधर द पियानो, ये सब ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जबकि इस तरफ ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखे हुए, एड कैंसल्ड। ओके, सो कैंसल, रीड, प्ले, इस स्लाइड में जितने भी वर्ब आपके सामने हैं ये सब एज अ ट्रांजिटिव भी यूज़ हुए हैं और इंट्रांजिटिव भी। अब वही बात मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ट्रांजिटिवली ही यूज़ हो सकते हैं, लाइक रेज, लव, थ्रो, केक, रिस्पेक्ट। कुछ इंट्रांजिटिवली यूज़ होते हैं, लाइक डाई, अराइव, कंप्लेन, लाई, स्टे। कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों वर्जन्स में यूज़ हो सकते हैं, लाइक स्टॉप, स्टार्ट एंड चेंज। So there is nothing hard and fast that you may get confused. There is no need to be, because there is variety of words. There is variety of verbs in English language. Okay, so you can go the way sentence is given. Okay, अब एक और example देखिए, kick is a transitive verb because it needs some explanation at the end. Kick what और kick whom. इसी तरह से हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी किकिंग के एक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए किक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। जबकि दूसरी तरफ देखिए, स्माइल, इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। द एक्ट ऑफ स्माइलिंग इन इट सेल्फ इज़ कंप्लीट, वाई, बिकॉज इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब, इट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट एट द एंड टू फर्दर to be further explained. I am sure you are getting what I am trying to convey. अब सेपरेट स्लाइड्स में मैं आपसे कुछ इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव की एग्जांपल्स शेयर करूंगी. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, द पॉपुलेशन ग्रू. द पॉपुलेशन इज द सब्जेक्ट, ग्रू इज व्हाट, वर्ब, and there isn't any object at the end. It means it is what, intransitive verb. The spark plugs fired. The wind blew hard. The water is running. The baby is sleeping. She hesitated for a moment and they skate beautifully together. ये तकरीबन तमाम ऐसे हैं जो कि वर्ब्स हैं जो कि अपने अंदर अपनी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रखे हुए हैं. इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद देर इज़ हार्डली एनी यू कैन से स्टोन लेफ्ट अनटर्न कि हमें किसी एक्शन की समझ नहीं आ रही, या इट साउंड्स एज इफ इट इज़ इनकम्प्लीट. ओके, इट इज़ कंप्लीट. जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्शन कुछ इनकम्प्लीट दिखेगा अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को माइनस करेंगे. देखिए, वी लाइक्ड द मैच. इफ वी जस्ट से वी लाइक्ड व्हाट, द मैच. आई क्लोज द डोर. ही कॉट द बॉल. शी विजिटेड मी एट स्कूल. I saw an endangered animal. She told me the way to get there. I like trees. यहाँ पे एक बात याद रखें कि ऑब्जेक्ट in the can be in the shape of a person and it can be in the shape of anything. Okay, liked what, the match, या फिर visited whom, me. I hope you got it. अब यहाँ पे देखें जो बात मैं अभी आपको बता रही थी, आई लाइक वेरी मच वॉट, इट नीड्स सम ऑब्जेक्ट. आई लाइक कैट्स, आई लाइक डॉग्स, और आई लाइक रीडिंग, और आई लाइक कुकिंग, वट एवर इट इज़. सो दैट इज़ वाई यू मस्ट नो दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज which in themselves are incomplete. They need any object after them to be clearly explained. Right? सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है. And lastly, what you have to keep in mind, a transitive verb has a direct object whereas an intransitive verb does not have. Okay, अब एग्जाम्पल देखिए, the audience applauds the actors. Applauds is transitive here because the actors are at their object. जबकि यहाँ पे देखिए, the audience applauds loudly. यहाँ पे भी एक्शन कंप्लीट है. यहाँ पे एक्शन इस तरह से लिखा गया है कि इसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट को लगा के फर्दर उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए सेकंड एग्जांपल में अपलॉड्स जो है वो इंट्रांजिटिव है. राइट.
So remember, especially those who are studying currently, students, you have to do what? You have to keep in mind that whenever the examiner asks such concepts in exams, most of the time, you can say 99%, he asks you about transitive and intransitive verbs within the sentence. Okay, that you have to identify whether verb is used as transitive or intransitive. So you have to keep it in your mind. For your further guidance, you can have this exercise. Okay, there are 7 sentences. आप इसमें से verbs को underline करके तो बता सकते हैं कि transitive है या intransitive है. This is for your practice. So that's all for today. Hope that the concept of transitive and intransitive verb is clear to you, and you will definitely practice and learn. If you will be having any queries, you can ask me in the comment box. Till the very next lesson, take care of yourself. Allah Hafiz.